अपॉर्चुनिटी था यहाँ पे मैच देखने का, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, तो मैं सोचा कि क्यों नहीं अभी सेकंड इनिंग हम लोग आए हैं देखने के लिए। फर्स्ट इनिंग थोड़ा और एक्सपेक्ट कर रहे थे अच्छा गेम हो, बट अर्ली ओवर्स में 3 विकेट गिर गए, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था हमारे लिए। बट लेट्स सी अभी आगे ये बॉलर्स का जो टारगेट इंडिया ने दिया है, आपको लगता है जो टारगेट दिया वो डिफेंड कर सकती है इंडिया? आई थिंक डिसेंट स्कोर तो है, अभी हमारे बॉलर्स हैं अच्छे, एंड आई थिंक शमी है, तो शमी आज कुछ कमाल दिखा दे तो यार 4 स्पिनर लेके खेल रही है और वरुण चक्रवर्ती को खिलाया गया है हर्षित राणा की जगह, तो लगता है इस विकेट पे जहाँ पर बॉल थोड़ा स्लो रुक के आ रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट है बैटिंग, यहाँ पर 4 स्पिनर इफेक्टिव होंगे? आई थिंक सो, बट अभी कैसा है हमारा, हम लोग क्वालिफाई भी कर गए हैं, तो मे बी टीम इज़ ट्राइंग टू थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रही है कि आगे वाले गेम्स में सेमीफाइनल्स में किन बॉलर्स को ले जाना है, उस वजह से ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया गया हो। तो आई एम एक्सपेक्टिंग, देखते हैं अभी बॉलर्स कुछ कमाल दिखाए तो हम लोग का आगे अच्छा रहेगा। तो पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम करण है और मैं इंडिया से हूँ, लेकिन यहीं दुबई में रहता हूँ। तो आज के मैच को लेकर आपको कैसा लग रहा है? इंडिया ने 250 के आसपास जो टोटल सेट किया है, आपको लगता है ये इनफ है न्यूजीलैंड को रोकने के लिए? आई थिंक ये एक डिसेंट टोटल है, क्योंकि मैं लास्ट मैच में भी आया था पाकिस्तान के साथ, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के पिच में मतलब बहुत स्लो रन्स लगते हैं। सो मेरे हिसाब से एक डिसेंट टोटल बन चुका है। मुझे लगा था अगर 200 के नीचे रहेगा तो एक डिफिकल्टी होती, बट above 240 I think it's a good total to defend. Hi, Ritesh Ramakrishnan. Hi Ritesh, what do you have to say about the match just gone so far? 249 for 950 overs. So yeah, I think it's an interesting score. I think maybe 10 runs too short, but we have an extra spinner today, so I'm hoping for some magic through that. So let's see. All the best. Yeah. You think it's a good strategy playing Varun Chakravarti instead of? Seems like the wicket seemed a bit slow from what I saw. So let's see. You never know. Dr. Saab, what you have seen of the match so far? 249 for 950 overs for India. You think enough runs on the board against New Zealand? Well, not very sure, but the pitch seems slow. That's why spinners have done well actually, and India didn't play that well, what we expected them to play to. And I hope, still keeping fingers crossed, that Indian bowlers will come back with complete strength, and hopefully we will still be able to win and top the group. Talking about Varun Chakravarti, he's playing instead of Harshit Rana. You think he's the one who can turn things around, and because he's been opted for? Yes, absolutely. I think Rohit Sharma and actually Gambhir must have read the pitch well. I'm hoping that Varun would actually will make a difference. And having seen these first 50 overs with the slow pitch, I'm sure he'll be our trump card. Sir, 249 for 950 overs. What do you have to say? You think India can defend it? I believe India can defend it because the wicket is too slow. Our spinners will come into play. And especially playing Varun Chakravarti is good strategic move, you think, today looking at the pitch? Well, they gave him a chance. This was not a strategy, I said. They just wanted him to come in and play a game, and I believe he'll play a role in India defending the total. What do you have to say about India's performance in this match? It was perhaps the most toughest match of this. I think it was a good fight after the start. They had 33 for 3, and credit to Shreyas Iyer for the performance, and of course Akshar Patel supporting a lot. Talking about India playing an extra spinner today, one fast bowler, one medium pacer, and 4 spinners. I think it's a good strategy for the match. I mean, they've been used to that a lot nowadays. India, you see more than the fast bowler spinners coming into play. So I like Varun Chakravarti personally, and I think it's a good experiment done because they have nothing to lose now, India. So it's a good thing to do. So Nidhi, what do you have to say about the match so far? 249 for 9. You think enough on the board? Yeah, I think it's okay, but it's just that if India come in their own space, India अपनी Indian वाली ship पे आ जाए, तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं. And I think initially it was little tough क्योंकि 3 हमारे star sports men were like not performing that इतना अच्छा, but then ठीक है, बाकी टीम को भी perform करने का days होना चाहिए, and I guess they'll do it. Do you think India can still pull it off from here? Yes. We, being an Indian, I cannot say even till the last breath, till the last ball, game has to be like, we have to be there, we have to cheer our team, and definitely, अभी तो पूरा एक inning बाकी है ना, तो कर लेंगे.